Good morning, everyone. Welcome to the dissection hall. I am Dr. Nikam, in charge of the dissection hall. कभी देखा है dissection hall? Look around and be comfortable with the space. We are going to spend lot of time together in this hall with dead body. कभी देखिए डेड बॉडी? नहीं देखोगे? डेड बॉडी, कम कम कम, थोड़ी सी जगह बनाओ. ये बिशन सिंह है और ये बेदी, हमारे लैब असिस्टेंट्स. एक नंबर के काम चो. आउट. जी सर. जी सर. जी सर. आउट फास्ट. आउट आउट आउट. आपने फिल्मों में देखा होगा, मेडिकल स्टूडेंट्स डेड बॉडीज को देखकर घबराने लगते हैं, उल्टियां करने लगते हैं, बेहोश हो जाते हैं, है ना? बकवास. वो बेहोश होते हैं स्मेल की वजह से. कोई बता सकता है ये स्मेल किससे आती है? Sir. हाँ, यस. Formalin, sir. Good. Very good. Before we begin, I want every one of you to understand one thing. This cadaver is not dead. What? It is alive with knowledge. Come, come. This is Dr. Pathology. मुझसे पहले एनाटॉमी यही पढ़ाते थे. He donated his body for medical science for you guys, so that you can understand the mysteries of the human body. What a man. बच्चों को मरने नहीं पड़ा रहे. Remember, whenever we are performing dissection on Dr. Pathology, be extra careful and very, very respectful. Understood? Yes, sir. Okay, let's start. Just as you can see, this is biceps muscle. Why is it called bicep? Because it has two heads of origin. This is small head, see, and this is, hey, don't push, don't push. Why is it called bicep? Because it has two heads of origin. This is small head, see, and hey, don't push. ध्यान देंगे. So this is small head, see, and this is large head. Understood? And this is belly of bicep. Okay. This is insertion of bicep at radial tuberosity. बिशन सिंह, बेदी, डॉक्टर पाटिल को उठाओ, उठाओ. डॉक्टर पाटिल, सॉरी, उठाओ. Who did this? Who did this? किसने किया? किसने किया? किसने किया? सामने आओ. उसका डिसेक्शन अभी की अभी कर दूंगा मैं. Why didn't you say that?